Describe the role of the cell membrane. Answer: the cell membrane serves as a protective barrier, regulating the passage of substances in and out of the cell. It also plays a role in cell recognition and communication, allowing cells to interact with their environment and other cells. Additionally, the cell membrane helps maintain the cell's shape and internal structure. सेल झिल्ली के किरदार की वजाहत करें। जवाब: खलिया की झिल्ली एक हिफाजती रुकावट के तौर पर काम करती है, खलिए के अंदर और बाहर मादों के गुजरने को मुनज़्ज़म करती है। ये सेल की शनाख्त और मवासलात में भी किरदार अदा करता है, जिससे खलियात अपने माहौल और दूसरे खलियों के साथ तामुल कर सकते हैं। मज़ीद बरां, सेल की झिल्ली सेल की शक्ल और अंदरूनी साख्त को बरकरार रखने में मदद करती है। Describe the structure and function of the nucleus. Answer: the nucleus is a membrane-bound organelle found in eukaryotic cells. It contains the cell's genetic material, organized in structures called chromosomes, which consist of DNA and associated proteins. The nucleus is responsible for regulating gene expression and controlling the cell's activities by directing the synthesis of proteins and other important molecules. It also plans cell division and reproduction. न्यूक्लियस की साख्त और काम की वजाहत करें। जवाब: एक झिल्ली से जड़ा हुआ आर्गेनियल है जो यूकारियोटिक खलियों में पाया जाता है। इसमें खलिए का जीनियाती मवाद होता है जो क्रोमोसोम कहलाने वाले ढांचे में मुनज़्ज़म होता है, जो डीएनए और मुताल्लिका प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है। न्यूक्लियस जैन के इजहार को मुनज़्ज़म करने और प्रोटीन और दीगर अहम मॉलिक्यूल्स की तरकीब को हिदायत करके सेल की सरगर्मियों को कंट्रोल करने का जिम्मेदार है। ये सेल की तक़सीम और तौलीद में भी किरदार अदा करता है। Explain the cell wall's structure. Answer: the cell wall is a rigid, protective layer that surrounds the cell membrane in plant cells, fungi, bacteria, and some protists. It is primarily composed of cellulose in plants. The cell wall provides structural support, protects the cell from mechanical damage, and helps maintain the cell's shape. It also plays a role in cell communication and acts as a barrier to pathogens. सेल वॉल की साख्त की वजाहत करें। जवाब: सेल वॉल एक सख्त, हिफाजती तह है जो पौधों के खलियात, फिंगी, बैक्टीरिया और कुछ परवेट्स्टस में सेल की झिल्ली को घेरती है। ये बुनियादी तौर पर पौधों में सीलोलिव्स पर मुश्तमिल होता है। सेल वॉल साख्ती मदद फराहम करती है, खलिए को मैकेनिकल नुकसान से बचाती है और सेल की शक्ल को बरकरार रखने में मदद करती है। ये सेल मवासलात में भी किरदार अदा करता है और पैथोजेंस के लिए रुकावट का काम करता है। Describe the structure and function of the endoplasmic reticulum and Golgi apparatus. Answer: the endoplasmic reticulum is a network of membranes found in eukaryotic cells that is involved in protein and lipid synthesis, calcium storage, and drug detoxification. It has two regions: rough ER, which has ribosomes attached and is involved in protein synthesis, and smooth ER, which lacks ribosomes and is involved in lipid metabolism and detoxification. रेटिकुलम और गाल्जी अपरेटस की साख्त और काम की वजाहत करें। जवाब: एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यार झिल्लियों का एक नेटवर्क है जो यूकारियोटिक खलियों में पाया जाता है, जो प्रोटीन और लिपिड की तरकीब, कैल्शियम ज़ख़ीरा करने और ड्रग्स की डिटॉक्सिफिकेशन में शामिल होता है। इसके दो अक़साम हैं: खुरदरा ER, जिससे राइबोसोम मुंसलिक होते हैं और प्रोटीन की तरकीब में शामिल होते हैं, और हमवार ER, जिसमें राइबोसोम की कमी होती है और लिपिड मेटाबॉलिज्म और डिटॉक्सिफिकेशन में शामिल होता है। The Golgi apparatus is another membrane-bound organelle in eukaryotic cells that is involved in processing, packaging, and sorting proteins and lipids. It consists of flattened sacs called cisternae and plays a key role in the modification of proteins before they are transported to their final destination.
गोल्जी अपरेटस यूक्लियोटिक खलियों में एक और झिल्ली से मुंसलिक ऑर्गेनियल है जो प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और प्रोटीन और लिपिड्स को छांटने में शामिल है। ये चपटी हुई थैलियों पर मुश्तमिल होता है जिसे सिस्टरने कहा जाता है और प्रोटीन को उनकी आखिरी मंजिल तक पहुंचाने से पहले उनकी तब्दीली में कलीदी किरदार अदा करता है। Explain the structure of a chloroplast and how it's different from a mitochondrion. Answer. The inside of a chloroplast has structures called thylakoids where photosynthesis happens. Mitochondria have structures called cristae where energy is made. Chloroplasts make food for plants, while mitochondria make energy for cells. क्लोरोप्लास्ट की साख्त की वजाहत करें और ये कि ये माइटोकॉन्ड्रिया से कैसे मुख्तलिफ है। जवाब, क्लोरोप्लास्ट के अंदर कई ढांचे होते हैं जिसे तैलाकिड कहते हैं जहां फोटोसिंथेसिस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी नामी ढांचे होते हैं जहां तवानाई बनाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट पौधों के लिए खुराक बनाते हैं जबकि माइटोकॉन्ड्रिया खलियात के लिए तवानाई बनाते हैं। How can water balance issues affect animal and plant cells? Answer. In both animals and plants, water balance problems can cause cells to shrink or burst. This happens when cells lose too much water, dehydration, or take in too much water, swelling. Cells need to control the amount of water and salts inside them to stay healthy. In plants, water balance is important for keeping the plant upright. Turgor pressure. पानी के तवाज़ुन के मसाइल से जानवरों और पौधों के सेल्स कैसे मुतासिर हो सकते हैं? जवाब, जानवरों और पौधों दोनों में पानी के तवाज़ुन के मसाइल सेल्स के सिकुड़ने या फटने का सबब बन सकते हैं। ऐसा इस वक्त होता है जब खलियात बहुत ज़्यादा पानी, डिहाइड्रेशन, खो देते हैं या बहुत ज़्यादा पानी लेते हैं। सूजन। खलियों को सेहतमंद रहने के लिए अपने अंदर पानी और नमकियात की मिक़दार को कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। पौधों में पौधे को सीधा रखने के लिए पानी का तवाज़ुन ज़रूरी है। What is the fluid mosaic model? Answer. The fluid mosaic model describes the structure of cell membranes. It says that the membrane is like a fluid made up of many different molecules, such as lipids and proteins, arranged in a mosaic pattern. This model helps explain how the membrane is flexible and allows some substances to pass through while blocking others. फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल क्या है? जवाब, फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल सेल मेम्ब्रेन की साख्त को बयान करता है। इसके मुताबिक सेल मेम्ब्रेन एक फ्लूइड की तरह है जो बहुत से मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स जैसे लिपिड्स और प्रोटीन्स से बना है जो एक मोज़ेक पैटर्न में तरतीब दिए गए हैं। ये मॉडल ये बताने में मदद करता है कि मेम्ब्रेन किस तरह लचकदार है और ये कुछ मादों को वहां से गुजरने देती है जबकि दूसरों को गुजरने से रोकती है। Differentiate prokaryotic cells from eukaryotic cells. Answer. Prokaryotic cells are simpler and smaller than eukaryotic cells. They don't have a nucleus or membrane-bound organelles. Eukaryotic cells are larger and more complex, with a nucleus and organelles like mitochondria and the endoplasmic reticulum. प्रोकार्योटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में फ़र्क बताएं। जवाब, प्रोकार्योटिक सेल्स यूकैरियोटिक सेल्स से सादा और छोटे होते हैं। उनके पास न्यूक्लियस या झिल्ली से मुंसलिक ऑर्गेनील्स नहीं होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स बड़े और पेचीदा होते हैं जिसमें एक न्यूक्लियस और ऑर्गेनील्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। Explain the structure and function of leucoplast. Answer. Leucoplasts are a type of plastid found in plant cells. They are colorless and store nutrients like starch, oils, and proteins. Leucoplasts are involved in the synthesis and storage of these important molecules, which are used for energy and growth in the plant.
ल्यूकोप्लास्ट की साख्त और काम की वजाहत करें। जवाब: ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड की एक किस्म है जो पौधों के खलियों में पाई जाती है। वो बेरंग हैं और नशास्ता, तेल और प्रोटीन जैसे ग़िज़ाई अज्जा को ज़ख़ीरा करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट उन अहम मालिक्यूल्स की तरकीब और ज़ख़ीरा में शामिल हैं जो पौधों में तवानाई और नशोनुमा के लिए इस्तेमाल होते हैं।